Hi guys, so let's start with today's session. This is just a quick session where we will be discussing some of the things that will be helpful for you for your exam. So I hope every one of you has completed your videos, you have completed your chapters by this time. So all those who are yet to complete their syllabus, guys, it's high time. Just make sure that at least you are done with your syllabus. At least once you have completed all the chapters. Now the thing is ki what else to do in this upcoming days when the exam is just around the corner. How can we improve on our knowledge so that we can use this knowledge during the time of exam. So now if you are done with the videos, you have completed your co-reading well. With videos, I mean you have completed your co-reading, you have gone through the syllabus at least once. Your target in this upcoming days should just be to focus on the past papers. So just try to complete as many past papers as you can of the topics, especially of those topics which you feel are a bit difficult for you. For example, if you are just doing questions related to chapter 1, आप EMH के questions करी जा रहे हो and you are feeling that you are continuously studying 4 hours a day but you are not focusing on the correct topics, and that means that is not going to be helpful in exam. So EMH is definitely important from exam perspective, especially now since exam is online. So you can get bookwork question in II and you can get some theory questions from IFOA. So just focus on EMH theory. बार multiple style questions करने की ज़रूरत नहीं है EMH का, because we have limited content in EMH and a typical same exam style pattern that keep on repeating. Chapter 2 utility theory is important because it's important from numerical as well as from theory perspective. So sometimes numerical of utility theory is quite tricky. So make sure कि आपके concepts clear होने चाहिए. You should know कि concave utility function कब बनता है, convex utility function कब बनता है, when is a function said to be isoelastic, what are the different characteristics, or how do we measure utility. If we ask you to calculate certainty equivalent, you should be clear with that. What are the different characteristics of an individual, like an individual should be risk averse, should be non-satiated, how to check on risk aversion, how to check on non-satiation, you should be clear with this. Then comes stochastic dominance. So first order stochastic dominance, second order stochastic dominance. When does first order stochastic dominance fails? Why do we move to second order stochastic dominance? So इससे related theory clear होनी चाहिए, plus 1 or 2 numerical questions related to this. अब इन तीनों में से second and third chapter can be definitely tested on Excel as well. So just make sure कि Excel के अंदर इनकी आपको as such बहुत ज़्यादा practice करने की ज़रूरत नहीं है, because almost a similar type of questions which are there in your A part can be tested in your B part. It's just the graph things that they can ask you to test कि अच्छा using graph you can you prove कि is it a first order stochastic dominance or second order stochastic dominant. So you should know to draw the graphs, first thing. Second thing, you can be asked on simulations as well, like they can give you a simulation of different returns and they can ask you to calculate the different utilities corresponding to different returns. So these type of questions are itself covered in videos. So ये एक ऐसे questions है जो आपको मतलब I'm just repeating the way in which they can be asked, so you should know this. Then chapter 4 comes definitely measures of investment risk. So just make sure कि आपको variance निकालना आना चाहिए, semi variance, VAR, especially the VAR portion. You should know how to calculate VAR, you should be clear with the concept of VAR, you should be clear with the theory behind all this. What are the advantages of VAR, what are the disadvantages associated with VAR, why do we move from VAR to non-VAR, so you should be clear with that. Then we have portfolio theory and asset pricing models. So portfolio theory and asset pricing models more important from CM2A perspective. अब इसमें से बहुत ज़्यादा as such difficult question नहीं बनता. So typical exam style questions जो पहले past paper में test हुए हैं, same वैसे ही questions expected है. So just make sure that you are done with those questions. So इसके लिए at least in 8 chapters के लिए, initial के 8 chapters के लिए आपके past papers completed होने चाहिए from 2012 onwards. In case you are planning only from IFOA, so just focus yourself only on IFOA questions. In case you are planning from both the societies, make sure you have completed all the questions which are mentioned in summary list.
Now comes Brownian motion, that is from chapter 9 to 11. We have all the concepts of Brownian motion and log normal model. So from IFOA perspective, and even though the exams are online, you won't be getting any derivations as such. So they have clearly mentioned. So any derivations which are there in your Brownian model or in their Ito's lemma, you won't be getting tested on that. So it's high time that you are not wasting your time, and you should know the derivation from knowledge perspective, but it's not the time that you are mugging up the derivation, because that is not required for exam now. So you should just know कि हाँ अगर मुझे SD निकालना है तो मुझे Ito's lemma किस accordingly यूज़ करना है, कब मुझे 2 variables का केस यूज़ करना है, कब मुझे single variable का केस यूज़ करना है, what are the different characteristics of Brownian motion. इसके भी बस अगर आप 5 पेपर्स कर लोगे तो more than sufficient. And then very important chapter is log normal model, important from both theory as well as from numerical perspective. So log normal model की आपको theory पे काफ़ी focus करना, because that is one chapter which can definitely be tested as a long marker in theory as well. For numerical also you can be tested. So plus these chapters main chapter 9 to 10 still can next be asked in Excel, but chapter 11 can definitely be tested on your Excel. Then comes chapter 12 to 15 जो हमारा मेन कंटेंट रहता है CM2A का भी एंड CM2B का भी. यहाँ पर इन 4 चैप्टर्स में बिल्कुल भी गलती का स्कोप नहीं है. तो अमेरिकन पुट कॉल, अमेरिकन कॉल, यूरोपियन कॉल, ब्लैक स्कोल्स मॉडल, बाइनोमियल मॉडल, हर चीज़ आपको एक्सेल में भी करनी आनी चाहिए, हर चीज़ आपको CM2A में भी करनी चाहिए. ऑल दी थियोरी एसोसिएटेड, व्हाई इज व्हेन डू वी यूज बाइनोमियल मॉडल, व्हेन डू वी यूज ब्लैक स्कोल्स मॉडल, व्हाई डू समटाइम्स वी कैन नॉट यूज अ ब्लैक स्कोल्स मॉडल. सो यू शुड बी क्लियर विद ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स. अगेन डेरिवेशंस लेस एक्सपेक्टेड फ्रॉम IFOA, नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड. सो स्किप द डेरिवेशंस इन केस आप अलग से PD अप्रोच की डेरिवेशन अगर करने में लगे हुए हो. अगेन दैट वाज इंपॉर्टेंट व्हेन यू वर जस्ट स्टडिंग CM2, व्हेन यू हैड स्टार्टेड विद CM2, you wanted to gain knowledge, but now when we're just near to exam, these derivations are not important from exam perspective. So skip these derivations, focus on full question solving, especially from chapter 9 to लेकर 15 तक full question solving पे focus करो कि given a stipulated time frame, am I able to solve all these questions in Word? Where am I lagging? Am I using equation editor or am I just simplifying the notations? Both the things are equally acceptable. तो अगर आपको equation editor नहीं आता, there is no hard and fast rule that you have to learn equation editor. You can just use your simplified notations. IFOA is very lenient related to notations that you are using. तो कोई notation आपको उनकी specific stand notation sheet से अगर आप रेफर कर रहे हो completely okay है. अगर आप खुद से भी रेफर करना चाहते हो, खुद से आपने लिख दिया this stands for this, तो wherever I would be using this, it will signify this. तो IFOA is completely flexible with respect to your notations. So the pattern has definitely improved in the manner that they are targeting more of theory application based questions, less of those questions which require algebra. But ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आपका numerical नहीं आएगा. Obviously it's CM2, so you would be getting algebra as well, but the marking would be adjusted in such a manner that you can complete your course in given time frame. Then chapter 16, 17, not too much. I won't say कि you can leave those chapters, but I will also say that just don't focus a lot on these chapters. So once you are done with your entire syllabus and you feel that now you are in a position that you can practice some other chapters, go for these chapters. Only cover the syllabus or only cover the contents that we have covered in videos, and simultaneously you would be able to practice all your past papers from that content only. So don't stress yourself with irrelevant content related to these chapters. Just focus on the content which is there in the videos. That's more than sufficient. Now coming to next chapter, that is Vasisek model. Again, no derivations, but again you cannot get bookwork questions. जैसे पहले हम offline exams जब होता था तो there used to be bookwork questions, अच्छा Vasisek की equation लिख दो या Helen-White की equation लिख दो, या how can you edit the one factor model to incorporate two factor model. That will definitely not be there. You can get questions related to small rt, capital RT, price calculation, plus you can get theory associated with different pricing models. You should know the advantages and disadvantages associated with use of each particular model. That you should know.
Then we come to credit risk. Credit risk is an easy chapter which can be tested again in both CM2A as well as CM2B. तो तीनों मॉडल्स की थ्योरी, तीनों मॉडल्स की वर्किंग क्लियर होनी चाहिए. जितना अपने कॉन्सेप्ट्स इन दोनों चैप्टर्स के आप स्ट्रॉन्ग रखोगे उतना आपका A और B पार्ट अच्छा जाएगा. So this is that chapter in which you can score perfect in both CM2A and B provided that you are clear with the concepts. I myself feel that some students just for the sake of completing the syllabus they are just doing the questions but they're not clear with the concepts. So you have to be clear with the concept, that is what is required. तभी आप इसमें perfect score कर सकते हो. Then we have Rune theory, runoff. Runoff again, you guys know, last night also there was one question of around 27 marks that was statistics in CM2B from runoff using I think Born-Newton method. So runoff again is important from both CM2A as well as B perspective. तो 4 methods है, 2 methods Excel में practice कर लो, 2 methods Word पे practice कर लो, more than sufficient है. Unnecessary irrelevant time spend करने की ज़रूरत नहीं है again for chapter 21. Chapter 20 Rune theory definitely a bit of a tricky chapter which requires more of application. आपको पता है कि इसमें से मुश्किल questions आ सकते हैं. तो अगर आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखो, बस इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखो एंड जस्ट सी फ्रॉम आउट ऑफ 100 कि आपके कौन से मेन टारगेट क्वेश्चंस हैं जिनको आप सबसे पहले टारगेट करोगे. तो हमें क्या सीखना है कि हमें 100 मार्क्स का पेपर अगर गिवन है, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट CM2A, तो क्या मुझे 100 के 100 नहीं स्कोर करना है. मुझे पास होने के लिए ऑल्दो द वेटेज ऑफ CM2A इज 70%, सो इवन इफ आई डू फ्रॉम आई मीन एज पर माई ओन नॉलेज, इफ आई फील that I am perfect in whatever I am doing, तो अगर मैंने 80% कंटेंट भी अपने पेपर का बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, that means 80% of the questions as per my knowledge I feel that I have done it perfectly well, तो then बाकी के अगर जो 20% रह जाएगा उसमें आप थोड़ा बहुत रिलैक्स हो सकते हो. What we do is हम 100% कंप्लीट करने के चक्कर में irrelevant चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं और न्यूमेरिकल जिसमें हमें ज़्यादा वेटेज है या थ्योरी जिसमें हमारी ज़्यादा वेटेज है हम उस पर फोकस ही नहीं करते. स्पेशली जैसे यूटीज में अगर मान लो लेट सपोज देयर इज वन क्वेश्चन व्हिच हैज 3 पार्ट्स एंड इफ आई आस्क यू टू सॉल्व, आई मीन फॉर एग्जांपल इफ वन क्वेश्चन इज हैविंग हाई वेटेज इन टर्म्स ऑफ थ्योरी, यू गाइस स्किप दोस क्वेश्चंस बिकॉज यू फील थ्योरी तो हो ही जाएगी. एंड जब एग्जाम में थ्योरी की बात आती है अगेन वी फाइंड लैक ऑफ वर्ड्स बिकॉज वी डोंट नो व्हाट टू राइट एंड व्हाट नॉट टू राइट. सो डू नॉट राइट एनीथिंग डायरेक्टली फ्रॉम द बुक, दैट इज नॉट एट ऑल अलाउड. सो को रीडिंग आप ओपन कर सकते हो बट दैट्स इररिलेवेंट टू यूज बिकॉज यू डू नॉट हैव टाइम इन एग्जाम टू see anything from the co-reading. आप what to watch question exactly match होगा नहीं, तो co-reading आप क्यों यूज करोगे. आपको ये जो अभी आपके दिन बड़े हैं, बीट आया एग्जाम, बीट आया फॉर एग्जाम, जस्ट यूज दीज डेज टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर लैकिंग इन एंड जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट कंटेंट. अगर आपको लगता है आपने को रीडिंग बहुत टाइम पहले पढ़ी थी एंड देयर इज अ नीड टू रिवाइज को रीडिंग, सो स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1, कीप ऑन रिवाइजिंग द को रीडिंग. अगर आप IFOA से एग्जाम दे रहे हो तो यू शुड बी हैविंग अ नोटबुक रेडी विद यू और यू शुड बी हैविंग वन एक्सेल शीट रेडी विद यू जिसमें आपने ये लिखा है चैप्टर 1 में हमने इस कंटेंट पे फोकस किया, चैप्टर 2 पे इस कंटेंट पे फोकस किया, चैप्टर 3 पे इस कंटेंट पे फोकस किया. सपोजिंगली लेट्स सपोज सितंबर 2016 का क्वेश्चन 6 वाज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ वेयर एंड you actually like the question, आपको उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, तो you are actually writing in your notebook okay in case something like this comes you can refer September 2016 question 6. क्रेडिट रिस्क का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने तीनों मॉडल्स का कंपैरिजन किया. लेट्स सपोज इट वाज सितंबर 18 क्वेश्चन 4. यू कैन राइट in the guidance book that you're keeping with you during the time of exam that if something comes like this I can at least take some reference from this September 2018 question. So this is just to improve your way of studying, this is just to smarten your way of studying कि अगर आपने कुछ नया सीखा है या कुछ अच्छा सीखा है और आपको लगता है कि आपको उसको एग्जाम टाइम तक कैसे याद रखना चाहिए, तो you can just write or pen that in a particular notebook or Excel file wherever you feel comfortable so that in case you want to refer that in exam you can. But I know कि during the time of exam it becomes very difficult to complete the exam on time. तो हम ये बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग जितना हम पहले से सोच के रखते हैं उतना टाइम ही नहीं मिलता हमें फोकस करने के लिए. बट स्टिल जितना आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हो उतना बेटर है. फॉर CM2B यू शुड नॉट वरी कि हमें ये चीज़ एक्सेल में कैसे करनी है बिकॉज अगेन उनको आपसे परफेक्ट आंसर या परफेक्ट मॉडल नहीं चाहिए, बस दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन द वे हाउ यू आर रीचिंग टू द कंक्लूजन.
So for example, if you are being given a question on runoff, just आपको उसी तरीके से करना है जिस तरीके से आप एक्सेल में करते हो. इफ यू आर बीइंग गिवन वन क्वेश्चन ऑन क्रेडिट रिस्क, सेम उसी तरीके से करना है जिस तरीके से आप नॉर्मल नोटबुक में करते हो. इट्स जस्ट इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट और इंस्टेड ऑफ जस्ट टाइपिंग इट, वी आर डूइंग इट इन एक्सेल. तो एक्सेल कुछ अलग से नहीं है. जो आपने CM2A में सीखा है वही आपने CM2B में सीखा है. अब मेनी स्टूडेंट्स फील कि मेरा लास्ट टाइट में सपोजिंगली मेरा लास्ट टाइट में पेपर अच्छा नहीं गया. क्यों अच्छा नहीं गया? बिकॉज आई वाज नॉट श्योर अबाउट CM2B. So I am not at all in support of this thing that if you feel कि I did not practice CM2B, that's why my paper did not go well. That should not be the case because CM2B आपका कब अच्छा नहीं होगा? जब आपका CM2A के concepts clear नहीं होंगे. Otherwise जो आप CM2A में सीख रहे हो वही तो CM2B में है. It's just word की जगह हम लोग Excel use कर रहे हैं. उसको आपने परफेक्ट आंसर में नहीं आना, आपने हाईलाइटिंग वगैरह वहां पे फोकस नहीं करना. आपका फोकस है ये मेरे पास डेटा है, मुझे अपनी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग से जो समझ में आ रहा है आई विल डू दैट. आपको 100 के 100 मार्क्स स्कोर नहीं करने. हमें हमेशा, स्पेशली दिस इज केस फॉर विद CP2 स्टूडेंट्स एज वेल, द प्रॉब्लम इज वी ऑलवेज फील कि अगर हमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन या अगर हमें एक पर्टिकुलर मॉडल एक्सेल में करने के लिए बोला है, देन वी हैव टू रीच टू द परफेक्ट कंक्लूजन. ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स टू रीच टू द परफेक्ट आंसर, बट that should not be my target. My target is to complete all the steps perfectly. मुझे स्टेप वाइज चलना है बिकॉज इन दोनों के अंदर आपके मार्क्स जो हैं वो स्टेप्स पे बेस्ड है. आपने कहीं और कैलकुलेशन करी, चाहे वो सही करी गलत करी, लेकिन आपको उसके मार्क्स मिलेंगे अगर आपका तरीका सही है, इरिस्पेक्टिव कि आपकी कैलकुलेशंस गलत है. तो यू आर गेटिंग मार्क्स फॉर ईच एंड एवरी स्टेप. सो एक्सेल के अंदर स्टेप्स एलिमिनेट नहीं करने. न्यूमेरिकल के अंदर टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, as I always keep on telling, you should start good, you should end good. लेकिन बीच में अगर let's suppose 3 steps हैं, उसको एक स्टेप पे ले आओ या 2 स्टेप पे ले आओ, depending on कि whether the step is relevant or not. So try to skip the irrelevant steps. But ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ स्टेप ना करो. आप कैलकुलेशन बेशक आप नोट कैलकुलेटर में करके मुझे डायरेक्ट आंसर दोगे तो that is also not acceptable. So these were certain things that you guys should keep into consideration while preparing for finally for your exam. One more thing that I would like to highlight is that you have your mock test scheduled in the upcoming weeks. So just make sure that you are attempting your mock test, again preparing it in a typical and giving it in a typical exam style pattern only. आप देखो कि आप अलग से 3.5 घंटे में किस तरीके से क्या attempt कर पाते हो. उस mock test से ही आपको काफ़ी help मिलेगी that what all areas you are lacking in. We have mock test scheduled for both CM2A as well. So use this facility, try to gain from that, try to work on your weakness areas, because definitely studying the same exam again for the next time will not make any sense. So just try to clear the exam in this go, get increments, just increase your paper count and move to next count. So let's now just quickly go through last tight exam so that we can see कि किस particular area का कितना content पूछा गया था. So this is CM2A April 21 exam paper. So first question was targeting, you guys can also open your CM2A, take 2 minutes time and just quickly open April 21 exam paper.
So I hope every one of you have your paper with you. So first question was based on shortfall probability calculation, VAR calculation. So this was basically 14 marks question targeting chapter 4. If we see second question, 16 marks question from chapter 12, 14, 15. Then third question was on utility functions, variance calculation. So this was from chapter 2 and 4, again 11 marks question. तो पहले आपको ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस टारगेट करने हैं इंस्टेड ऑफ एनी शॉर्ट क्वेश्चंस. देन क्वेश्चन 4 वाज फ्रॉम चैप्टर 21, कंप्लीट 7 मार्क्स थ्योरी. सो अगर आपको लगता है आप थ्योरी में कंफर्टेबल हो, यू कैन जस्ट प्रैक्टिस, यू कैन जस्ट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एज द फर्स्ट क्वेश्चन एज वेल. फिफ्थ क्वेश्चन was from utility functions, 12 marks question from chapter 2. Sixth question was from Brownian theory, 8 marks question. Seventh behavior point question, again easy question. So seventh is an easy question, 8 marks का आपको सिर्फ behavior बताना है. 8th again is from Brownian, from 7 marks. 9th is from chapter 6 to 8 for 12 marks. 10th is from chapter 3 for 5 marks. So paper, if I give a quick review to the paper was not at all difficult, provided you guys know ki how to manage the exam. So obviously for everyone the way the particular chapter is different in terms of whether it is tough, or some people find chapter 12 to 14 easy, some find chapter 9 to 11 easy. So it is just your individual preference कि which chapters do you guys feel easy. तो मेरा हमेशा से मैं आपकी यही रिकमेंडेशन रहेगी कि पहले आपको वो चीजें टारगेट करनी चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस. सो डोंट गिव योर, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम होता है जब हम इनिशियल का सबसे पहली बार पेपर हमारे सामने आता है, तो दैट्स द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम. सो योर इनिशियल आवर्स शुड बी डाइवर्टेड टुवर्ड्स लॉन्ग क्वेश्चंस. So if you are comfortable in theory, just start attempting theory question first. At least 10 marks की theory direct आप expect करते हो. If you are comfortable in the initial chapters, you can pick those questions. Like if you are comfortable in shortfall probability, VAR calculation, you can pick this as your first question. If you are comfortable more in Black-Scholes and options working, you can pick this second as your first question. Then if you are comfortable more in this, again this second part, third question का second part from onwards is again theory. So again this is targeting theory. If you feel you know this answer, target question 2 and 3 as your first and second. 4 was again theory based, in which you should know. हम लोग अभी तक सिर्फ 4 मेथड्स पे फोकस करते हैं, बट येस डेफिनेटली इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि कोर रीडिंग को जरूर एक बार आप एक क्विक रीड दे के जाना एग्जाम से पहले. सो अगर अभी तक आपको लगता है कि आपने कोर रीडिंग को बिल्कुल भी रीड नहीं दिया है, देन पिक फ्रॉम चैप्टर 1, गिव अ गुड रीड एंड मेक हाइलाइट्स कि अच्छा चैप्टर 1 में हमने ये चीजें हैं. डू नॉट मेक नोट्स बिकॉज यू डोंट हैव टाइम दिस मच कि आप नोट्स बनाओ, बट डू मेक हाइलाइट्स ऑफ द थिंग्स. ओके चैप्टर 1 में ये चीजें हैं, चैप्टर 2 में ये चीजें हैं, चैप्टर 3 में ये चीजें हैं. अगर आपने ऐसे ही चैप्टर 1 के नोट्स बनाए और आपने लिखा होगा कि अच्छा चैप्टर 1 में हमारे पास ये है कि अच्छा व्हाई आर वी यूजिंग बेसिक चेन लैडर, व्हाट्स द difference of chain ladder with respect to inflation adjusted. So if you know in your guidance book that you have these things available in your chapter 21, you can give a read to chapter 21 during that particular time of exam and can draw the points from that chapter, but not direct book points, adjusted for your conditions or maybe the question, the way in which it is asked. So it's just up to you. The point that I want to highlight is it's just up to you that how you guys want to proceed with the paper. There is no hard and fast rule कि पहले हमें ये question करना है या नहीं करना. But लेकिन as an examiner, for example, if I am also checking your paper, एक favorism develop होता है depending on the way you are attempting the question. आपका अगर पहला question correct है, second question correct है, third question correct है, तो automatically अगर fourth question में कुछ गलती भी आती है ना, we tend to become bit biased
एंड वी डिडक्ट लेस मार्क्स कंपेयर टू व्हाट वी वुड हैव डिडक्टेड अगर आपका फर्स्ट भी गलत जा रहा है, सेकंड भी गलत जा रहा है, थर्ड भी गलत जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमें लगता है यार बच्चा तो गलत ही कर रहा है, बहुत मुश्किल है इसका पास होना, तो ही और शी शुड नो दिस थिंग, तो हम ज्यादा मार्क्स डिडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर है, तो इसीलिए ये बोला जाता है कि आपकी स्टार्ट जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो it is not at all difficult to clear this exam. I mean, many students are influenced by many other students that it becomes quite tricky to clear CM2, CS2 in online pattern. So it is definitely not at all tricky. But you should be, I mean, smart in your studies. अगर आप unnecessary derivations पे focus कर रहे हो, unnecessary graphs की workings पे focus कर रहे हो, that is not going to give you any good result in your exam because that is not required. So focus should be on your different past style papers which have been tested especially after online exam. आप बैठकर एक बार पूरा 3 घंटे का अप्रैल 21 का पेपर प्रैक्टिस करो, आप बैठकर सितंबर 20 का पेपर प्रैक्टिस करो, just see that is there something which you are not able to complete in a given time frame. आप एक्सेल बैठ के 3 घंटे प्रैक्टिस करो, एक्सेल के लिए अगर आप PBOR पे unnecessary irrelevant time अपना फोकस कर रहे हो, you won't be getting any questions from PBOR. Your questions will be of the typical pattern जिसमें जिस तरीके से आपके CM2A के questions हैं उसी लेवल के CM2B के questions हैं, तो उनके लिए आप past papers practice करो, दोनों इंडिया और IFOI दोनों, even if you are planning from IFOI, but for CM2B you can practice CM2A questions as well. So that was what I wanted to convey in today's quick session, that how you guys should proceed. So in case still you have any other doubts that you want to address, so feel free to mail on the institute number or just WhatsApp on the institute number for the same. So that's it from my side for the day. Thank you.